Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter of ecology. What makes a speaker in the poem angry the day after the first rain and year after year? The day after the first rain, after year, the speaker becomes very angry because his mother has a severe attack of migraine caused by strong fragrance of pollen of the flowers of the red champak every time it blooms. क्योंकि पोएट सबसे ज़्यादा गुस्से में है जस्ट बिकॉज उसकी मम्मा को माइग्रेन अटैक होता है जब भी फर्स्ट टाइम जो पोलन फ्लावर्स है रेड चंपक के वो हमेशा ब्लूम करते हैं तो उनकी मम्मा को माइग्रेन अटैक होता है. What according to the mother is a story of the origin of champak tree. According to the mother, the tree had grown by dropping of passing birds. ये ट्री ड्रॉप हुआ है मतलब ये ट्री ग्रो हुआ है by dropping the passing bird by chance, which is considered to be a good omen. Why is a pollen fog street long? The pollen fog is street long because it is spread everywhere. क्योंकि ये हर जगह spread होता है street में. It has covered the street so it look as if it was very street long. उसने street को ऐसे cover करके रखा है जैसे कि लगता है street बहुत long है. Why does she oppose the idea of cutting down the champak despite the fact that its pollen gives her a migraine? Despite the fact that the pollen of champak tree gives her migraine, she opposes the idea of cutting down the tree because it gives him basket full of flowers every year. मतलब कि उसको चंपक ट्री से माइग्रेन होता है फिर भी वो उसके अपोज क्यों थी कि नहीं इस ट्री को नहीं काटा जाए क्योंकि वो उसे बास्केट भर के फ्लावर्स देता है हर एक साल. इट इज़ एन ओल्ड एज शी इज़ और वो भी उसकी उतनी ओल्ड है सो शी इज़ इमोशनली अटैच टू इट. तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है उस ट्री से and it had grown by dropping of a passing bird by chance, which is considered a good omen. Comment on the appropriate of the title ecology. The title ecology is absolutely appropriate. Ecology का मतलब क्या होता है appropriate. In the poem, the poet seems to convey जो title है इस chapter का ecology वो appropriate है क्योंकि in this poem the poet seemed to convey the thought that a particular kind of tree may have both negative and positive factor. इसमें poet ये बताते हैं कि एक particular tree में दोनों factor होते हैं positive भी negative भी. So it need not to be cut down. तो ज़रूरी नहीं है कि उसको काटना चाहिए. जस्ट एज स्पीकर मदर सच एज सीवियर माइग्रेन जैसे कि स्पीकर की तो मम्मी है उसको माइग्रेन होते हैं उस फ्लावर से बट स्टिल वो उसको काटना नहीं चाहती है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उससे फ्लावर्स मिलता है. तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं. The poet explores the heart of Indianness in the poem in many ways. The poet explores the heart of Indianness in the poem in the following ways. A son love for his mother इसमें बेटे का प्यार दिखाया है माँ के लिए. Mother sacrificing nature मम्मी ने कैसे sacrifice किया है नेचर के लिए. Mother attachment to the tree किस तरह मम्मी का attachment है tree से. Strong interest of family the poet reference to Hindu heritage as I mentioned the god and the ancient belief etc. There is a spirit of agelessness about the champak tree which forms the heart of a poem. Do you agree? Yes, I agree that there is a spirit of agelessness about the champak tree which forms the heart of a poem because throughout the poem it is not mentioned anywhere how old champak tree and they have been bursting into flowers for years. Describe the entire setting of the poem which helps the vocabulary used by the poet to do so. Okay. The red champak tree. There were some champak trees near the poet house. कुछ champak tree poet के घर के पास में है. When there is a first rain on the rainy season, जब भी पहली बारिश होती है rainy season में, poet return home in very bad mood. Poet अपने घर आता है बहुत ही खराब mood में. He knows that champak tree blooms फ्लावर्स आफ्टर फर्स्ट रेन. उसे पता है कि चंपक फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं पहली बारिश के बाद में पर उसके फ्रेगरेंस से उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन होता है मतलब सर में दर्द होता है. इट सीम्स दैट ही कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम अ माइल अवे. तो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर से भी इसकी स्मेल को स्मेल को सूंघ सकती है. It looks as if the fragrance has filled the whole street so heavily that it's not possible to breathe to shift it. Yellow pollen has spread over the street. The fragrance entire his house like scale smells, bone creaks nightly, visiting voices.
What does the poet mean by blending migraine? Blending migraine का मतलब क्या है? By blending migraine, the poet means severe attack of migraine. इसका मतलब होता है severe attack of migraine, a very bad kind of headache, बहुत ही बुरा टाइप का headache, often causing a person to vomit, और इससे person vomit करने लगता है. Headache became so severe that a person feels difficult to keep his eyes open, कि वो अपनी आंखें भी खोल के नहीं रख सकता है. What message does the poet want to convey through the poem? वो कौन सा मैसेज कन्वे करता है पोएम के थ्रू? थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट टू कन्वे द मैसेज दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्री मे हैव सम डिसएडवांटेज, कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्री में कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है और कुछ एडवांटेजेस भी हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट इट शुड कट डाउन द ट्री. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेड़ों को काट दें. What irony do you find in the poem? The sense of irony is reflected when the mother very angrily protests the idea of cutting down the tree, even though she is suffering from very badly and migraine caused by it. She is emotionally attached to the tree and say it is as old as she herself. Thank you.